Hey guys, and welcome back to our channel. I hope the previous job opening that Cognizant has posted and that I made a video on about, that was for the programmer trainee role under Cognizant Agency program. I really hope you would have applied for that because that was the most basic programming role that you would get into in Cognizant. So, if you have already applied for that, it means you would have given your online AMCAT assessment, which was the first step before you could move into the further interview or technical round process. So, अगर आपने वो assessment clear कर दी है and you have got your results, then the next thing that you're gonna face is the interviews and HR round. So, they are gonna be same जैसे ये usually follow करते हैं for the further roles under Gen Z program like PATs, PAs, etc. etc. So, if you have already given your online assessment and you're waiting for your results, wait for a day or two. You will definitely get your results in case if you're passing it or not. AMCAT आपको easily एक mail भेज देता है या you will get an email from Cognizant whether your assessment was cleared or not and if you're eligible for next round or not. So without any further delay, let's move to the interview process that Cognizant is following for the programmer trainee role under Gen Z. सो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जैसे ही आप कॉग्निजेंट के किसी भी ओपनिंग के लिए पोस्ट करते हो लाइक पीएटी है या पीएस है, जेएनसी के किसी भी प्रोग्रामर रोल के लिए आप जैसे अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट असेसमेंट या फर्स्ट इवैल्यूएशन जो आपकी होती है वो एमकैट की होती है एंड दैट इज़ द बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस दैट यू विल गेट अराउंड like 50 to 100 questions depending on your roles. I think for programmer trainee it's like 50 to 70 questions, or if they have still kept the same then you will get approx 100 questions. एंड बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जैसे आपके कम्युनिकेशंस, इंग्लिश, वर्बल, क्वांटिटिव, ये सब सारे जो एप्टीट्यूड में यूजुअली फॉलो किए जाते हैं. सो वंस यू क्लियर योर ऑनलाइन एमकेट असेसमेंट, यू विल बी मूविंग टू द टेक्निकल इंटरव्यू. एंड हाँ, वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ जो आपका ऑनलाइन एमकेट असेसमेंट होता है उसमें इंडिविजुअल सेक्शन का पासिंग होना ज़रूरी है. यू हैव टू क्लियर ऑल दी सेक्शंस, like you have to individually clear all the sections before you move to the technical interview. And जब आपका technical interview clear हो जाता है, you will move into the HR round and this is the final round of your interview. So once you clear your HR round, उसके बाद you will get an offer letter or the results whether you clear your interview for whatever role you have applied for. And usually अगर आप HR round तक आ गए हो, until unless you have raised a concern, your interview is definitely gonna be cleared or it's already gonna be considered. Okay. तो टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस या टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली प्रोग्रामर ट्रेनी रोल के लिए, आई क्लियरली माइंड यू, अगर आपने सिर्फ प्रोग्रामर ट्रेनी रोल के लिए अगर आप रेफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ स्टे इन द वीडियो. बट इफ़ यू आर प्रेफरिंग फॉर एनी अदर रोल लाइक पीएटी और पीए which Cognizant is offering, then I think this video might not help you over here क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. I'll make a detailed video later for the PAT role, which is the entry role for all engineers or who have completed their double degrees like MTech or any other things, MBAs, etc. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस या किस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपसे यूजुअली पूछे जाएंगे. सो स्पेसिफिक टू प्रोग्रामर ट्रेनी रोल, ये रोल बहुत बेसिक सा रहेगा. यू विल मोस्टली बी सपोर्टिंग एनी प्रोजेक्ट, और अगर there is a need to get you into a specific programmer role, then don't worry about it. Cognizant will give you a full-fledged training and उस ट्रेनिंग में आपको completely सिखाया जाएगा जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम करोगे. इन केस इफ इट्स नॉट गोना बी अ इन डीप प्रोग्रामिंग रोल, तो बेसिक नॉलेज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सफिशेंट है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट Cognizant will give you a full-fledged training on whatever technology, whatever programming language you are going to work on, whether it's from support, development or testing role. Okay. तो टेक्निकल राउंड जब आपका स्टार्ट होगा, the first thing that you would get is like any other programming or any other IT company interview. First thing you will get is like introduce yourself, क्या हो आप, कहाँ से हो, what is your educational background, क्या कर रहे हो अभी. सो ये सारी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. इट्स कम्प्लीटली अबाउट यू, सो यू डोंट हैव टू वरी. आप जो हो, आपके जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपको उन्हें बता देनी है. एंड डोंट जस्ट पैनिक. The whole key for clearing an interview is do not panic, just stay confident. Even if you are committing a mistake, that's okay.
you don't have to worry about it. That's completely okay if you're just flumming with your words, if you're missing something, that's okay. Just don't worry, don't panic, and keep your confidence till the end of your interview. ओके एंड हाँ, जो भी लाइक अगर कोई BCA या BCA वाला कोर्स से अगर है, तो यू हैव फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स विच आर मोस्टली फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं दैट व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें इम्प्लीमेंट हुई, इज़ देयर एनी प्रैक्टिकल यूसेज टू दैट प्रोजेक्ट. So these are the basic questions that might be asked in terms of programming languages or IT terms, if I could say. But any non-IT people like BBA, BCA करने वाले लोग, BBA या MSc, BSc जिन्होंने किया है, उनसे if you guys do not have your final year projects, so the whole questions that you will be getting will be about your education, about your degree program. जैसे 3 ईयर का प्रोग्राम है तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस, या कोई भी अगर आपके प्रैक्टिकल्स हैं, कोई भी लैब असेसमेंट्स है, तो वो सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. और एक क्वेश्चन जो बहुत मतलब एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि यू गाइज आर कम्प्लीटली फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड. The first question that you will be getting is why Cognizant, because Cognizant is an IT service provider. So your job or your role revolves around IT, right? So you have to be give a clear and sure answer that why you want to move to Cognizant or any IT field. Okay. एंड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कुछ एप्टीट्यूड या कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, लाइक यू हैव बीन गिवन सम प्रॉब्लम एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. सो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी दोज जो आपके सिलेबस या आपके एजुकेशन लाइन या आपका जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उससे ही डील करेंगे. कुछ भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स उठ के नहीं आएगा. सो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर इज़ इन योर सिलेबस, इन योर डिग्री सिलेबस, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. ओके. और हाँ, कुछ फेमस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डिस्टेंस रिलेटेड, क्वांटिटिव होते हैं, या जो भी एप्टीट्यूड के जो अपने टॉपिक्स पढ़े उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी दिखेंगे. द डिफ़िकल्टी लेवल वोंट बी एज हाई एज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी. इट इज़ वेरी ईजी टू क्लियर द इंटरव्यू फॉर प्रोग्रामर ट्रेनी. जस्ट हैव योर कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट. एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो यही होगा कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, अगर आती हैं तो कौन कौन सी आती हैं. और हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोलते हो दैट हाँ मुझे जावा आता है या मुझे पाइथन आता है, तो मेक श्योर आप उन्हें अपना जितना भी आपका एजुकेशन लेवल या जितना भी आपका नॉलेज लेवल है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, वो उसे बता दो दैट हाँ मुझे कंसेप्ट्स आते हैं इसके, बट आई एम नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग. Because your interviewer will get an expectation when you're saying that I'm fluent in Python. It means you can write a code. Okay. So जितना भी आपको आता है, just give a idea. जितनी expectations आपका इंटरव्यूअर आपसे रख रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस आप ही सेट कर रहे हो. तो जितनी भी नॉलेज आपको है वो उन्हें बता दीजिए कि मुझे इतना ही आता है एंड आई एम गुड ऑन दीज. एंड इन केस इफ़ यू डू नॉट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज़ ओके. मैंने पहले भी बताया था, कॉग्निजेंट आपको एक पूरी ट्रेनिंग 3 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों पे ट्रेन किया जाएगा. सो इट्स गुड इफ़ यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट इट्स नॉट एज बैड इफ़ यू डू नॉट नो एनी ऑफ देम. Okay. So just don't worry about it. And technical interview ही होगा which will be quite serious or a game changing point for your joining in Cognizant, क्योंकि HR round is almost cleared. यहाँ HR round जो है it's almost good as like a joining formality, nothing else. So अपना जो भी टेक्निकल इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से देना. जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी आपको नॉलेज है इन सब के बारे में, वो सब कुछ अच्छे से अपने इंटरव्यू के बताना. ओके. एंड जस्ट डू नॉट पैनिक, दैट्स इट. द मोमेंट यू पैनिक यू लूज द ग्रिप ऑफ योर इंटरव्यू. सो जस्ट डू नॉट पैनिक एंड go smoothly with the interview process. And once you can clear your technical round, the final and the most easier round will be HR round. यहाँ पे basically आपकी documents validate होंगे, आपके documents collect किए जाएंगे. Cognizant आपसे concern लेगा that मैं आपके जो भी documents है वो आपसे collect कर रहा हूँ, are you giving me a concern, क्योंकि आप अपने
क्रूशल डॉक्यूमेंट्स या क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके मार्कशीट्स, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह, वो सब कुछ जो है आप कॉग्निजेंट को वर्चुअली वो प्रोवाइड करोगे. सो कॉग्निजेंट विल आस्क यू फॉर अ कंसेंट वेदर वी शुड टेक इट और नॉट. एंड बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी जो यूजुअली एचआर आपसे पूछते हैं, दैट आर यू रेडी टू वर्क इन एनी ऑफ द कॉग्निजेंट लोकेशंस अक्रॉस पैन इंडिया, किसी भी टाइम पे, किसी भी वीक में, लाइक आर यू रेडी टू वर्क अंडर एनी कंडीशंस. So that's it. And one more thing that Cognizant has recently started, because you won't be under an internship program. So Cognizant will definitely ask you when your degree program is getting finished, or if you have already completed it, when are you ready to join Cognizant, and what is your vaccination status, because in case if you have to come to office in any moment of time, you must be fully vaccinated. So these are the questions that will be falling under HR round. This is basically a formality round. If you already clear your technical round, you will get an email that your HR round is scheduled for this date, and you just have to join it. You just have to give your details, and that's it for the joining. That will be required, or that is the formalities that are required before you go to the Cognizant. And once you clear your HR round, you will get your offer letters as soon as your HR releases them. It can be as early as 1 week or 2 weeks, or sometimes it takes a month, but definitely you will get your offer letters and your joining dates or joining letters. But that's the further process, and we can talk about that later. So if you have any questions, if you have any queries related to this interview process, any doubts that you want to ask, feel free to drop them in the comment section. If you like this video, please hit the subscribe button so that you get all the updates that we are posting on this channel, and feel free to share this video. Thanks for your time. All the best.